Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Sir Numan Tasneem, Sir Mizan, and Dr. Usman. Welcome to this session. So we are starting with this again with the same case scenarios. So Dr. Numan Tasneem, you are the examiner and I am the candidate. So go ahead. Bismillahirrahmanirrahim. So a 30 years old male has presented in emergency department with a history of gunshot wound back about 1 hour back. Gunshot wound on back about 1 hour ago. So you receive the patient. How will you proceed? So on receiving this call, I will. He is vitally stable at present. He is vitally stable with pulse 80 per minute and BP 120/80, and just complaining of pain at the vague pain in the lower back and front and lower abdomen. Okay, so on receiving this information, I will activate my trauma team, and I will start off with the ATLS protocol, start off with the primary survey and resuscitation, and I will wearing the taking all the precautions, the personal protective equipment. So as the patient is, I will make sure that his airway is patent. And then moving on to the breathing. So I will provide him the oxygen and just ask one of the team member to apply the pulse oximeter to see what is his saturation, and then move on to the pulse. Airway breathing is clear. Airway breathing is clear. Then breathing is clear. Okay, circulation, you have mentioned that the pulse is 100 and blood pressure is 110/70. Pulse is 80 beats per minute. 80 beats per minute and blood pressure fine. Okay, so one of the team member will put in the IV cannula, take the blood sample for the CBC and cross match, and at the same time, so we will give them the one bolus of the crystallite to see the maintain the IV line. And I will rapidly see what the status of his chest is. The breath sounds equal on both sides, and the same then abdominal. Yes, breathing is okay. I've told you breathing is okay. Breathing is okay, and then I would like to see the abdomen. The one of the team member will expose the patient and see the abdomen whether then distended. Is there any exit wound? So from first of all, from the interior aspect of the body, and once we examine the fronts, and I will rapidly do the log roll to see the back of the patient, to see the entry wound and the exit wound of the patient. So there is an entry wound of about 0.5 into 1 centimeter on the right buttock. On the right buttock. There is no exit wound. There is no exit wound. Examination shows mild tenderness in lower hypogastrium. Okay, there's a mild tenderness in the lower hypogastrium. So there is no exit wound. Okay, so then I will look for, is there any other gunshot wound over the limbs as well or not? And there are no other gunshot wounds. No other gunshot wound. Okay, I will perform the digital rectal examination to see is there any evidence of rectal injury as well or not, and I will also examine this digital pulses of the limbs. You do a DRE and you find blood on your finger. Okay, so that means there is, yeah. So that means there is a rectal injury in this patient as well. So after doing the primary survey, so the disability part, that means patient is conscious, right? Yes, and yes. We have exposed the patients, and then perform the rapidly do the adjuncts like taking the blood sample, which I have already taken the blood samples, and putting in the Foley catheter. But before putting the Foley catheter, I would like to see whether there are any blood at the urethral meatus or not, and is there any evidence of the pelvic fracture or not. Okay, there is no pelvic fracture or blood. Okay, so rapidly, yes, I will order the chest X-ray, X-ray pelvis, and X-ray by putting a radiopaque marker at the entrance wound. So see where the trajectory of the bullet is in the where it's lying, and to see the extent of the track of the bullet. On X-ray, the bullet seems to be somewhere in the pelvis. You cannot see it exactly the place, but somewhere in the pelvis it is seen. In the pelvis.
So at the same time, I would like to have a fast scan as well. So with Okay. the okay, so once we completed the primary survey, as the patient, what is the condition right now? Is vital signs are stable? His vital signs are stable. He's an athlete. He's 30 years old, vitally stable, but there is tenderness and hypogastrium. Okay, then I will move on to the rapidly move on to the secondary survey, starting with the history. I would like to take the history. We're keeping in mind the ample, mnemonic, and then I will perform the detailed physical examination from head to toe. And Okay, after the secondary rest survey, everything is normal. Rest o- everything is normal. How will you okay, proceed now? okay. So the next would be patient is stable. So I would like to get the contrast and CT scan of the abdomen, the pelvis. Obviously, the patient will require the exploration. So CT scan is required for the planning of the surgery. Okay, so CT scan shows there is a rectal injury in intraperitoneal region. Okay. So the next step would be this patient require the exploration. So I will arrange the OT space and counsel the patient and inform the blood bank because we will be requiring the blood in the patient. And I will shift the patient for the exploratory laparotomy. Okay, so on laparotomy, how will you start your laparotomy and what uh, are you suspecting? What will you see in your laparotomy? Okay, in this patient, so there multiple injury could be there possibility of multiple injuries. So I will start off with before starting the laparotomy. I will make sure that everything is present. Blood is present in the OR, and the two suction catheter they present, and the laparotomy pads, warm saline, the vascular set is available. And after ensuring that and following the WHO safe surgery checklist, so I will start off with the midline incision and on opening the peritoneum. So just before that, I would like to see whether any abdomen is distended still or not. If there is no distension, so then I will open up the peritoneum and on opening, so I would like to see whether there are any blood inside the peritoneal cavity, clots or not. If there, yes, there are clots, so I will evacuate with my right hand and left hand will be protecting the underlying viscera. So after searching for the uh, any source of the hemorrhage, I will Okay, be yeah. so there is a mild to moderate amount of blood and fecal material inside the peritoneal cavity, and you find a laceration in the upper part of rectum. Okay, so What is your next step? right. So the first focus was to control the hemorrhage. So evacuate to I will evacuate all the clots and do the packing, and then I will focus see where is the source of the contamination. I will rapidly apply uh, the clamp, intestinal clamps, just to control the even the Babka can be applied to control the contamination. Then I would like to see what is the extent of the damage. I will assess the nature of injury is in the rectum, and is there any associated injuries for the small bowel, the large bowel, is in the retroperitoneal vessels as well. So depending upon the contamination and the assessment, so then I will decide. So everything is okay except from the injury to the rectum, anterior wall and posterior wall as well. Anterior wall and posterior wall. So what is the state of the Uh, contamination? well, you have found feculent material inside the Feculent. pelvis. I've So told you there is yeah, feculent so material. this patient will require the resection, and I will take out the sigmoid colon out and perform the most like if the distal end can be brought out, so it will be as a mucus fistula. Otherwise, it can be the Hartmann procedure. I will perform the Hartmann procedure and make sure that there's no other injuries. So why do you want to do the Hartmann procedure? Because in this patient, so you have mentioned that there's a contamination and it's a rectal injury. So that is why I'm not going for, and again, it's a gunshot wound. And so it's more safe for doing the Hartmann procedure rather than going for the anastomosis, primary anastomosis. Okay. So One thing more you would have done I the would like Hartmann. to I would like to gather the information, as I earlier mentioned that during the ample history. So the weapon which was it a low velocity, high velocity gunshot wound? So that will also help in making the decision. Okay, so you bring out sigmoid colostomy. You have to. Yeah.
Okay, you have done the procedure in post-op period day 2. The colostomy you have done, the its color starts changing to grayish, dusky grayish color. What is your next step now? Okay, so I would like to see what's the patient condition. Is the hemodynamic stable? Is there any evidence of abdominal pain or not? So right now that means that this colostomy is ischemic. So I would like to see with the help of the transparent proctoscope to see whether the gangrene is extending beyond the fascia or not. If it's not, then I will continue with the conservative. I will keep an eye with the repeated assessments. So if it's superficial to the fascia, so it will then there's no need of intervention. But if it's extending beyond the fascia, so then it requires the re-exploration. Okay. Okay, thank you, Dr. Shafakat. Thank you. Now the feedback, sir. क्या क्या चीजें सर मिस हुई हैं? अच्छा, मुझे एक तो ये बता, हार्टमैन तू इसमें क्यों करना चाह रहा है यार? हार्टमैन सर, एक तो गनशॉट वुंड, अभी डाटा जो ना आपने कहा था फीकल कंटामिनेशन है, अब हार्टमैन और थोड़ी सी चीज जो मैंने पूछा था कौन सा लो वेलोसिटी हाई वेलोसिटी है, नंबर 1। फिर कंटामिनेशन क्या आप रेक्टम रिपेयर करके आप कोलोस्टमी जब निकाल रहे हैं तो आप क्यों रिसेक्ट क्यों करना चाह रहे हैं? मुझे नहीं समझ आई इस बात की। नहीं, मैं तो उसको नहीं, मैं रिपेयर तो कर ही नहीं रहा, मैं तो कह रहा हूँ मैं रिसेक्ट करूंगा। एक वर्ड बोला रिसेक्शन का। रिसेक्ट करेंगे तो ये तो अपर पार्ट ऑफ रेक्टम उसने बताया है कि इंजर्ड है, तो में चलो नीचे उसको छोड़ देंगे तो बाद में क्या करेंगे? व्हाई डोंट यू रिपेयर इट? मतलब मेरा सवाल है कि व्हाई डोंट यू रिपेयर इट प्राइमरीली और प्रॉक्सिमल आप कोलोस्टमी कर दें? इसको जो है अच्छा, मैंने कहा कि मैंने रिपेयर बोला था। एक्चुअल एक पेशेंट था जो हमारा, नहीं, मैंने रिपेयर का नहीं बोला, मैंने कहा कि रिसेट करके उसको डिस्टल जो है ना, अब इस मजीद मैंने डाटा आपसे नहीं लिया ना कि किस लेवल पे एग्जैक्टली क्या उसके डिस्टेंस का, मैंने कहा कि बाहर लाया जा सकता है। हाँ? नहीं, अभी तो देखो ना शफाकत, आप यू आर मैनेजिंग द केस, यू आर डूइंग सर्जरी, सॉर्ट ऑफ अ प्लान सर्जरी, मतलब आपने सीटी स्कैन करके प्लान किया है। सो अभी आपको आइडिया होना चाहिए कि आपने क्या करना है। तो मेरे ख्याल में तो मैं आई वुड हैव गॉन विद रिपेयर एंड प्रॉक्सिमल कवरिंग कोलोस्टमी या ग्लासमी। हाँ, लेकिन अगेन नहीं, एक्सटेंट ऑफ द फीकल कंटामिनेशन पूछता है कि क्या कितनी कंटामिनेशन है, फीकल मटेरियल है। हाँ, कितनी कंटामिनेशन है? अच्छा, मुझे दो चीजों के जवाब दो। हाउ वुड द एक्सटेंट ऑफ कंटामिनेशन vary your management? Let it be a question. Yes. So if the gross contamination, so that is the factor which can increase the chances of the leakage postoperatively. Similarly, if the patient is hypotension, so you have already, sorry to cut you, but you have already, according to you have already done a Hartmann and colostomy. So how would the contamination, the degree of contamination affect your colostomy and Hartmann? No, if we do the repair, so that will affect it. If there's a gross contamination, so there is a chances of the leakage. But you are not doing the repair, na? You said you're not doing the repair. No. So that is why I'm not doing, because of there's a fecal material. So that's why mostly it's a gunshot wound. It's not the you can say it's high energy transfer injury. So there is a risk of the you can say cavitational effect. So that is why I'm going for the this Hartmann procedure. And how will you manage the initial injury, the gut, the rectum? Initial management is just the resuscitation and no, not initial management. How will you manage the rectum which has been perforated? Rectum which has been perforated. So that management is, again, it depends upon the site of the perforation. So it depends. It was upper rectum, right, Noman? Upper third of rectum बताया था ना? Upper third of rectum. Yes, he said so. Yeah. So it's a gunshot. So that means it will be sort of a severe injury.
in gunshot wound. It's not just the clean cut injury. So most likely it will be a shattered colon, shattered rectum. So it will be difficult to do the primary repair. So that's why I will respect that segment. You will resect that segment, okay? Yeah. So what's the plan later on? After resecting, now we have option of doing the anastomosis, primary anastomosis, and one other option is to just to bring the colon above out as a as a colostomy, and you can close the distal stump as a Hartmann procedure. It's not the formal resection, just like an. And what would be the and how would you plan a closure, or what do you plan for this patient later on? Later on, yes. So afterwards, with the help of we will be requiring a stapling gun to close this colostomy if it's a Hartmann procedure. You cannot bring this distal stump about close to the colostomy. अच्छा शफाकत, मेरा ख्याल है अगर आपकी ये केस एक्चुअल हमने मैनेज किया था कोई साल पहले ना, और हमने सिंपल रकम को रिपेयर किया था जो कि आराम से रिपेयर हो गई थी और पीछे क्लॉस्टमी निकाल दी थी और बंदा फर्स्ट क्लास किया था, सोल्जर था, कोई मसला नहीं। मेरा भी ये ख्याल है कि once you are doing a defuncting colostomy, तो उसमें आगे जो भी आपने रिपेयर किया अल्लाह ताला ठीक कर देता है मरीज को। वो तो मेरे पास एक सोल्जर है, मेरे पास भी एक सोल्जर आया था, मेरे पास इसी निकालने का। अच्छा Sir, my question is that do we really need in a perforating injury जिसमें क्लियर कट बुलेट है उसमें सीटी स्कैन कराने की जरूरत है, जब एक्सरे पेल्विस ही हो गया प्राइमरी सर्वे में, और प्राइमरी सर्वे में आपको बुलेट तो वैसे भी एक जो है ना मेटालिक चीज होती है, वो तो नजर आ जाएगी पेल्विस में आपको, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम इन सीटी स्कैन, क्योंकि परफोरेटिंग इंजरी में तो मेरा नहीं ख्याल के गन शॉट वुंड में कोई कंजर्वेटिव मैनेजमेंट होती है। इट इज तो it's not for the conservative management. I asked for the contrast and see patient. The first is I again checked whether the patient is stable or not. Right even after the secondary survey, the patient was stable. So the CT scan is required for the planning of the surgery. It's clear that it's a vector injury. It's clear, number one. So if you have a vascular injury, we are suspecting there is retroperitoneal hematoma, which will not be picked up on your clinical examination. So if you have picked up, there's a retroperitoneal hematoma, there is likely injury of the great vessels. So you will go in with a prepared mind. So that is for helping you and help in planning of your surgery. Okay, what are you going to do? I will put a counter question, Usman. Why not to have a CT scan? Sir, what additional benefit are we getting out of CT scan? मेरा सवाल ये है। देखो, it's a blind bullet. मतलब we don't have the exit wound. We don't know where all places it has been to. Secondly, it's a retroperitoneal entry. बटक की उसकी entry है bullet की. So I think it is advisable to go for a CT scan in a stable patient. And absolutely stable है, वो कोई vitally कोई उसको issues नहीं है. So why not? More of the penetrating trauma of the bag, though CT scan is recommended if the patient is hemodynamically stable. Penetrating trauma of the bag. Before exploration, a CT scan gives you a guide map, maybe. और ये उसमें भी ऐसे recommendations में भी है। ठीक है। And especially why not to especially the scenario here, you don't do even an appendectomy without a CT scan. Yeah. So I think it's better. They have CT scans in their emergencies. So why not to go for one? Exactly. सर मेरी लर्निंग है ये है कि जो appendectomy CT स्कैन करवाते हैं उसका तो रैशनल ये होता है कि नेगेटिव appendectomy ना हो, 30% विदाउट CT स्कैन जो है ना appendectomy नेगेटिव हो जाती हैं, लेकिन इसमें तो you have to invariably go in and see के जो है ना and repair जब there is gunshot wound clearly. देखो बात तो वही है, रिट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर में इसने कहा ना आईवी कंट्रास्ट के साथ आपने कराना है तो आपको वास्कुलेचर का कंफर्म हो जाता है कि वास्कुलर इंजरी नहीं है कोई। अब इसके अंदर बटक है तो सर अगर वैस्कुलर इंजरी हो तो वैस्कुलर इंजरी तो जो है ना वैसे भी इतना ब्लीड करती है, पेशेंट स्टेबल रह नहीं सकता। नो।
आपके कंटेन हिमाटोमा जो है, कंटेन हिमाटोमा पेशेंट बिल्कुल आपका स्टेबल भी हो सकता है। ऐसा तो नहीं है कि कोई शॉक में ही होगा ना। ठीक है। आप सीटी स्कैन कराने से आप यू आर प्रोटेक्टिंग द, ना कराने से यू आर प्रोटेक्टिंग द पेशेंट फ्रॉम द रेडिएशन, और यू थिंक दैट इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम? इट इज शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम। आईवी कंट्रास्ट सीटी स्कैन में कितना टाइम लगता है तकरीबन? देखें इसमें जो परफोरेटिंग इंजरीज में टाइम मैटर करता है ना, जितना आप लेट करेंगे उतना जो है आपकी कंटेमिनेशन बढ़ेगी, उतना ब्लड लॉस बढ़ेगा। इसमें पता है क्या है? अब इसमें जवाब जो ये बेसिकली अच्छा, हमने एग्जाम में देना ना की वाले जवाब, भाई से पूछ लेते हैं अब। एग्जाम में देना जो आपके पास रिकमेंडेशन गाइडलाइंस क्या है, उसकी बेस के ऊपर बात करेंगे ना। हम अपनी पर्सनल तो उसके ऊपर उस तरीके से हम उसको डिफेंड नहीं कर पाएंगे। तो आपने जो 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 इंटरनेशनल जो रिकमेंडेशंस क्या है, जो पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा की, वो उसके बाद हम शेयर कर देंगे। बाकी ठीक है, तूने अच्छी अब अच्छा चीज ये अच्छे पॉइंट्स ये थे कि तुझे एग्जामिनेशन तूने थॉरो किया एब्डोमेन का, और पीछे से देखा डीआरई की, और करने की जब वो क्लियर कट मैंने तुझे बताया तो एयरवे ब्रीदिंग बस बता दे, मैंने मोटा मोटा देख के मैं उस पे चला गया हाँ, एब्डोमेन पे। from the examination point of view, the answers were dragged in the initial part of the viva. उसको कट शॉर्ट किया जा सकता है once the examiner had told you कि जी vitally stable है. ओके, examination करें and try to get to the question what is what the examiner is going to ask you next. यानी उसने सिनेरियो तो बनाया है ना इंट्रा एब्डोमिनल इंजरी का, और हमारा आधा टाइम जो था वो निकल गया था एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन में ही. बिल्कुल सही। तो भी जरा जज करें कि एग्जामिनर किधर पहुंचना चाह रहा है. कि इसमें कुछ एग्जामिनर जैसे मैं मतलब एयरवे ब्रीदिंग बार बार कहने पे ना थोड़ा सा वो हो रहा था कि यार ये इरिटेट हो रहा था. क्यों नहीं आ रहा। यस. ठीक है, तो बाकी ठीक है। इसमें डीआरई इंपॉर्टेंट स्टेप था जो तूने किया, डीआरई इसमें बहुत मस्त थी। वो बंदा बिल्कुल. मिस, मेरा ख्याल है वो बंदा कोहली मस्त था, आपको ब्लैडर का पता चल गया, यूरोलॉजिकल इंजरीज का पता चल गया, दैट वाज गुड. ठीक है. सीटी बाकी स्कैन अच्छा। वाला बस वो अभी एंटी तेरी की में क्या है, वाज अ सीटी स्कैन टू बी डन और नॉट? यार एक्चुअल पेशेंट जो था उस पे हमने तो सीटी स्कैन कोई नहीं किया था, उसको तो हमने सीधा एक्सप्लोर किया था। जो हमारा ये सोल्जर था, साल पहले हमने किया था ये इधर सरगोदा में, तो वो तो बस सीधा सीधा किया था उसको। ठीक है, तो फिर सीटी स्कैन नहीं होना चाहिए था इस पेशेंट का. नहीं, हालांकि सीटी स्कैन है हमारे पास, लेकिन हमने कहा यार खोलते हैं क्या इसको। लेकिन ठीक है, तू ठीक कह रहा है, इधर सऊदीया में होना चाहिए सीटी स्कैन। उस्मान वाली बात ही थी ना फिर, कि मतलब आपने सीटी स्कैन का ऑन ग्राउंड फैसला किया कि नहीं होना चाहिए, तो बस ठीक है. हाँ यार, वो तो लेकिन पाकिस्तान की अलग प्रोटोकॉल है, यहाँ पे ठीक है आई तेरी बात। थिंक आई थिंक अब मुझे नहीं पता कि एग्जामिनर किस मोड में होगा, वरना अदरवाइज बोथ बोथ ऑफ द थिंग्स कैन बी जस्टिफाइड, कैन बी आर्ग्यूड अपॉन. बिफोर हाँ, बिफोर सर अभी रिसेंटली ना यहाँ पे गन शॉट, सर लेट मी, यहाँ पे ना जरा पिछले रिकॉर्डिंग महीने प्लीज स्टॉप करें. एक मिनट, मैं स्टॉप करता हूँ इसको ना सर, मैं इसको। तो फाइनल मैनेजमेंट ये होगी सर इसका, once the patient has recovered, later on they will require the reconstruction, but before that we would like to see the status of the sphincters as well. So in this patient most likely we will be requiring the stapling gun and for the anastomosis. ओके. Mobilization of the colostomy and then with the गुड इनफ, गुड इनफ. anastomosis. वेल डन. अभी सर लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सिनेरियो सर। अब आप सर पूछ ये लेंगे प्लीज. या उस्मान, आप सर पूछेंगे कि नहीं? सर आप शुरू करें, मैं भी रास्ते में हूँ, आप, मैं सुन रहा हूँ। अच्छा, तो हाँ सर, मैं भी थोड़ी मुझसे पूछ रहे। यस सर, Numan, जी नोमान. right, so a 50-year male has presented to you in your clinic with the history of the lump in the right inguinal region. It's reducible and it's reducible, the cuff and pulse in positive. How will you approach this patient?
So a 50 years old male who has a lump, reducible lump in right groin has likely a right inguinal hernia. And I will start by taking history. I will take history of the lump since when he's having this lump and what are the symptoms associated with it, any pain and aggravating or relieving factors for the lump, and his urinary habits, his any history of coughing or any chronic problems of Okay, coughing or the lump, smoking. he noticed the lump 5 months back. So it increases, size increases whenever he lifts the weights, and it spontaneously reduces once he lie down. Okay, so this confirms that diagnosis that it is apparently a right inguinal hernia. So what will you do? After taking history, I will examine the patient to confirm my findings. I will examine the hernial orifices on the both sides and genitalia and also his abdomen. And I would like to assess his chest and prostate as well, if there are any symptoms pointing to that. Okay, okay. So it's a reducible lump on the right side. So what else information do you want on the physical examination? As I've told, I would like to see his urethra as well for any urethral Okay, stricture. that's fine. It's fine. I want to see his chest for any signs of chronic bronchitis. There is no its chest is okay. And I also want to see his. I will ask about the urinary symptoms. If he has any urinary symptoms, I will do a On DRE local for examination, anything which you would like to ask, so see particularly. On local examination, I would like to see any previous scar marks. Yes. Any previous, so there's a scar in both the grinds, right and the left as well. So this patient underwent the hernia repair 5 years back. Okay, so this means that he has a recurrent hernia in the right, on the right side. He has a recurrent inguinal hernia. Yeah. So I would like to know that what type of repair had he undergone previously. So he underwent the mesh repair, open mesh repair. Okay. So I will like to counsel him and offer him laparoscopic hernia repair this time, so that the hernia can be approached from a virgin area, and Okay. various sinus adhesions can be avoided. Okay, so how will you perform the laparoscopic repair? I will. I have to study it. I say I haven't studied it yet, but I will start with creating pneumoperitoneum at the umbilical region. So what will the patient set up? Where will be you standing? So for the right side, I will probably be standing on the left side. Okay. So where will be the trolley assistant and your assistant? This I will study. I haven't studied it yet. Okay. Okay. Right. So what are the different techniques for doing the laparoscopic hernia? Different techniques are tap repair and tap repair. Total extraperitoneal repair and transabdominal intraperitoneal repair. Okay. So what are the steps? So in the extraperitoneal repair, यार ये पढ़ना पड़ेगा, ये मैंने पढ़ा नहीं है, sorry. Okay, fine. Okay, fine. So just suppose this patient, no, I'm giving you a scenario. You have performed the open repair with the mesh for the primary hernia, and the patient has reported back to you after 2 months. He's complaining of the wound pain, groin pain. Okay. Then how will you proceed? Yeah. So this patient has may be due to any nerve entrapment like ilioinguinal nerve, or there is also a chronic pain related to mesh placement. Apart from that, he may have any underlying infection, any infection related to the presence of take for any signs of inflammation, any signs of recurrence, or any signs of hyperesthesia. Okay, there are no signs of recurrence. What will you do?
He is complaining of pain. I would like Persistent pain. I would also like to check the sensations in the ilioinguinal nerve territory, that is upper medial thigh. Okay, there's hyperesthesia. Okay, so this patient likely has nerve entrapment in the scar or in the mesh. I would like to offer him conservative treatment first. I will give him painkillers like non-steroidal anti-inflammatory drugs and gabapentin along with Okay. it. Okay, you started off with the analgesics. So after 3 months, he has reported back again. He has reported back in your clinic. His pain is persisting. Okay, so then I would like to discuss this problem with my colleague of pain who is working in pain clinic, and I will like to discuss with him that whether any local blocks or any steroid injection may help him with his symptoms or with his pain. Okay, so he has performed the local block. So after a few months, the patient has reported again in your clinic. So now what will be the next step? So I will ask that how much is the improvement of pain? Okay. Has the patient improved or? Patient's he's saying that the pain is still there. So what will be the next step? What are the different options? I think if conservative treatment fails and he doesn't respond to conservative therapy, we may have to re-explore, although it's a challenge to re-explore in this area with mesh and all the adhesions, but we have to re-explore and identify the nerve and try to free it from the surrounding tissues and the surrounding mesh. Okay. And, okay. Thank you, Dr. Numan. अच्छा यार, ये एक तो ये बताओ, ये लेप्रोस्कोपिक पूरा प्रोसीजर मतलब पूछ सकते हैं? सर देखें, जब आपने प्रोसीजर कहा ना कि व्हाट विल यू डू, ठीक है, तो आपने खुद ही ऑप्ट किया कि मैं आई एम गोइंग फॉर द लेप्रोस्कोपिक, तो इट डिपेंड, एग्जामिनर आपसे पूछ भी सकता है, जी बताएं हाउ विल यू परफॉर्म इट। एक तो वैसे होता है ना कि व्हाट आर द ऑप्शंस, तो उसमें तो दैट इज द थ्योरेटिकल नॉलेज, लेकिन अगर हम कहते हैं व्हाट विल यू डू, तो उसमें जो फिर आपने ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, तो वो उसके बारे में आपको क्लियर होना चाहिए। ये बेले में लिखा हुआ है, टैप और बेले में लिखा हुआ है? सर उसमें भी है, थोड़ा सा है, लेकिन वो आपको ऑपरेटिव उसमें से मिलेगा ना। तो ये है कि ये लैप जब भी बोल रहे हैं लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर्स है ना, वो आप उसमें से वो प्रोसीजर अगर तो इफ यू आर डूइंग इट, तो फिर तो बोलें, क्योंकि फिर वो आपको अगर फर्स्ट आप कहते हैं ना मैं करता हूँ, तो मैंने पता क्या करना था, फिर उसके बाद मैंने आपकी इसमें डिफरेंट कॉम्प्लिकेशन में लेके जाना था कि ये कॉम्प्लिकेशन हो गया, आप क्या करेंगे लेप्रोस्कोपिक में ना, वो तो हमारे आगे फिर डिस्कशन चली नहीं है। तो मैं उसको ये कहता हूँ कि मैं असिस्ट करता हूँ, मैं करता नहीं हूँ, असिस्ट कराता हूँ, ये मैं तो कह आप सकता नहीं, तो आप इससे सिंपल कह सकते हैं, आई विल, अगर आप नहीं करते सर बिजान में बताएंगे कि इसको आप रेफर कर सकते हैं किसी लेप्रोस्कोपिक जिसके पास एक्सपीरियंस है, वो कोई ऐसा इशू नहीं है। तो सिंपल उसका, हाँ ठीक है। तो लेकिन ये कि इस पेशेंट में ऑब्वियसली जो बेस्ट ऑप्शन हुई है लेप्रोस्कोपिक रिपेयर ही है, इट्स अ रिकरेंट इंग्वाइनल हर्निया, तो बेस्ट इज द लेप्रोस्कोपिक रिपेयर। तो अगर वो कहते हैं नहीं जी अच्छा ठीक है जी आप रेफर करें, आप मुझे बताएं कि जी व्हाट आर द स्टेप्स, फिर वो थ्योरेटिकल आपसे पूछ सकता है कि होता क्या है जी, कौन सी डिफरेंट टेक्निक्स हैं, जिस तरह ट्राइंगल्स कौन सी वाली, इस तरह के सवाल भी पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपने कहा है कि जी मैं करूंगा लेप्रोस्कोपिक, तो फिर देखें ऑब्वियसली फिर तो वो एग्जामिनर के ऊपर है, डिपेंड्स अपॉन की क्या है उसके पास, तो पूछ सकते हैं। तो ये एक टैप का जो ना उसका देख, हाँ टैप का जो ना ट्रांस एब्डोमिनल प्री पेरिटोनियल जो रिपेयर है ना वो, और दूसरे वाले जो टैप जो टोटली एक्स्ट्रा पेरिटोनियल जो रिपेयर्स हैं, तो उसमें फिर डिफरेंट आपकी जो सर्जन की टीम की आपकी सेटअप है, राइट का इंग्वाइनल हर्निया तो आप लेफ्ट साइड पे उसके खड़े होंगे, और जो कैमरा असिस्टेंट आपका या तो शोल्डर पे चला जाएगा, उसके लेफ्ट शोल्डर पे, ठीक है, या इवन आपके सामने भी आ सकता है, और जो जो ट्रॉली जो अपना मॉनिटर है वो आपकी उस तरफ होगा, जैसे अपेंडिक्स का होता है ना, आप इक्वल अलाइनमेंट होगा, हाँ उस तरफ होगा, ठीक है। फिर पोर्ट प्लेसमेंट अगेन बेसबॉल डायमंड कॉन्सेप्ट के मुताबिक आपने वो बने आर्क उसकी बनानी है, जो टारगेट होगा इसका वो डीप रिंग होगी, डीप इंग्वाइनल रिंग,
और उसके ऊपर 18 सेंटीमीटर की आर्क बनाएंगे, वहां पे आप इसके एक सुप्राम्बिलाइकल पोर्ट आएगा, डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट हैबिटस कि कितना ओबीस है, तो उस हिसाब से अपने देखना, बहुत नजदीक पोर्ट डालेंगे तो फिर आपको मुश्किल होगा। ठीक है, तो जब आप एंटर होंगे तो फिर उसके बाद आपने फ्लैप, यू नीड टू रेज द, पहले डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी है कि आपने देखना है कि इज इट अ डायरेक्ट हर्निया, इनडायरेक्ट है, यू नीड टू आइडेंटिफाई द डिफरेंट लैंडमार्क्स, जो मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट, देन इज द लेटरल अम्बिलिकल लिगामेंट, मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट, लेटरल अम्बिलिकल लिगामेंट, एंड लेटरल अम्बिलिकल लिगामेंट के नीचे होती है डीप इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। देन आपके डिफरेंट जो दूसरे लैंडमार्क के आइलियोपिविक ट्रैक, वो आपने आइडेंटिफाई करनी, वो कहाँ पे है। ठीक है, फिर उसको देखते हुए फिर आप आगे फर्दर अपनी डिसेक्शन जो है वो स्टार्ट करते हैं। जो फ्लैप आपने रेज करें, इंटीरियर स्पाइरलिक डीप रिंग से आपने 4 सेंटीमीटर लैटरली 2 o'clock पे स्टार्ट करेंगे, और फिर आपने उसको निक लेके आएंगे मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट तक। ठीक है, तो ये वीडियो आप देख लेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। फिर उसको यू नीड टू रेज द फ्लैप्स, उसके बाद फिर शुरू होता है वो, मैं उस पे कोई भी आप वीडियो देख लें तो उसमें क्लियर हो जाएगा ये टाइप के प्रोसीजर्स के हैं, स्टेप्स के हैं। बाकी रहेगी जो बाकी ये nerve- रिलेटेड तो जो बाकी nerve क्रॉनिक पेन थी, management- क्रॉनिक पेन, हाँ हाँ, हाँ वही क्रॉनिक पेन का बताओ, ठीक है हाँ मैनेजमेंट क्या उसमें कोई है? उसमें सर, उसमें जो बेस्ट, जो आपने जब स्टार्ट किया था ना इनिशियल, तो आपने कहा राइटली आइडेंटिफाइड कि इट कुड बी अ रिकरेंस, नर्व एंट्रैपमेंट हो सकती है, बाकी चीजें आपने उसको देख लिया आपने। ठीक है, आपने इनिशियली यू स्टार्टेड ऑफ विद द कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, इट वाज नॉट वर्किंग, देन यू रेफर्ड द पेशेंट टू द पेन क्लिनिक। अब आगे क्या स्टेप्स हैं, अभी फिर दोबारा आपके पास आ गए तो इसके अपने स्पेशलिस्ट सेंटर हैं जो पेन मैनेजमेंट के, जो हर्निया के होते हैं ना ग्राइंड, इस पे उसके बाद क्या होते हैं, न्यूरेक्टमीज होती है। न्यूरेक्टमी ऐसे नहीं होती कि आपने उसको सिंपल आपने यू हैव एक्सपोज द उसी वोंड में से जाएंगे तो आप बड़ी जल्दी से नर्व को आइडेंटिफाई करें, बड़ा मुश्किल होता है ये। रिट्रोपेरिटोनियल एंडोस्कोपिक न्यूरेक्टमीज होती हैं, मैश रिमूवल्स हैं, डिफरेंट इसकी वो है कि किस तरीके से करते हैं। लेकिन बेस्ट है कि इसको आप जब इस तरह का है पेशेंट तो फिर आपको हायर सेंटर में, जो वहाँ पे जो स्पेशलिस्ट जहाँ पे ये करते हैं उसके उनके पर रेफर किया आपको। ठीक बल्कि है मैं उसको इसके मैं इसमें एक में मैं शेयर भी करता हूँ, इसकी जो पेन मैनेजमेंट का है ना, मैं आपको अभी 1 मिनट इसमें देखता हूँ सर किधर गया है। हाँ, ये आपके पास आ रही है स्क्रीन से, हाँ हाँ किधर गया। मैं आपको पेन कहाँ, ये हाँ ये है सर, ये है सॉरी मैं यूरोपियन हर्निया the एसोसिएशन की है ये, जो है ना गाइडलाइन जो है ना। तो ये इसमें पूरा का क्रॉनिक पेन का बड़ा अच्छे से लिखा हुआ है कि किस तरह आपने मैनेज करना है, स्टार्टिंग विद ट्रिगर पॉइंट इन्फिल्ट्रेशन, नर्व ब्लॉक्स हैं, लेप्रोस्कोपी की हुई है तो उसके बाद अगर पेन है तो एमआरआई रूल कराना है टू रूल आउट द अदर पैथोलॉजीज। बाकी उसमें जो सिर्फ हम चल रहे थे कि आपने ब्लॉक्स हैं, इंजेक्शन हैं, स्टीरॉयड के लोकल एनेस्थीसियाज हैं, फिर उसके बाद आ जाती है इसकी जो ना न्यूरेक्टमीज, जो है ना मैश रिमूवल भी है, कॉम्बिनेशन है, लेकिन उसके लिए आपको ये नीचे अगर देखें ना यहाँ पे, द ये देखें, ट्रीटमेंट इन स्पेशलिस्ट सेंटर विद एन एक्सपीरियंस मल्टी डिसिप्लिनरी टीम डिपेंडिंग ऑन लोकल सेटिंग। ये जो मेन इसकी है ये ना, मैं शेयर कर देंगे आप ये हो ग्रुप में गया ना सर शेयर कर। आपके पास, आ गया, ये आ गया ना, ये इनको मैं कर दूंगा, वरना इसके अंदर भी है ना, ये इस वीडियो के अंदर ही है ये। सर ये बेले में भी दिया हुआ है, ये बेले में भी दिया, पेन मैनेजमेंट ना, बेले में भी पूरा एक चैप्टर दिया, वो दिया हुआ है पूरा एक सफा। अच्छा ठीक है। हाँ ये लेप्रोस्कोपी के लिए ना, ये न्यूरो सर्जन करते हैं, सिंपैथेटिक न्यूरेक्टमी कहते हैं इसको। और नंबर ठीक लंबर जो है ना, जहाँ से ओरिजिन होती है नर्व की ना, वहां पे जाके कोई इसकी नर्व रूट काटते हैं। ठीक है। तो ये हम खुद नहीं कर सकते, ये पहले मैं ये समझता था कि जब हम खुद नर्व काट देंगे ना जहां से मिल रही है। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं है। हाँ वो फिर मैंने बाद में पढ़ा है, तो ये जो है ना वो आपको स्पेशल सेंटर ही भेजना पड़ता है। रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन ठीक भी होती है, रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन भी होती है नर्व्स की, तो वो भी ऑप्शन है। तो ठीक हो गया सर। तो मिजान क्या कह ये रहा था पेन मिजान? मैं एक तो मैं ये पूछ रहा था कि इसमें पिछले दिनों एक एमसीक्यू इस तरह का मेरी नजर से गुजरा था। कोई और एक बंदा पढ़ रहा था तो उसने मुझसे ये सवाल पूछा था।
इस केस में डू वी नीड टू रिमूव द मेश एंड डू न्यूरेक्टमी, या मेश रहेगी और न्यूरेक्टमी होगी? वो पता है क्या, वो उसकी जो न्यूरेक्टमी है ना, ये रीट्रो रीट्रो जो होती है ना, पेरिटोनियल सर आवाज कम आ रही है आपकी। मैं आवाज सर नहीं ये आ कह रही रहा हूँ, शफाकत। इसमें सर एंडोस्कोपिक जो है ना, वो रीट्रोपेट्रोनियल न्यूरेक्टमी भी करती है, रेडियो फ्रीक्वेंसी के साथ भी करती है, ब्लेजन होती है। बीच में उन्होंने लिखा हुआ है कि जी आप न्यूरेक्टमी विद मैश रिमूवल कॉम्बिनेशन जो है ना वो करना पड़ सकता है। अच्छा, मेश मेश रिमूवल क्यों करेंगे इसमें, वैसे पूछ रहा हूँ, बिकॉज अ, करेक्ट वो जो मैं बता रहा हूँ ना एमसीक्यू था, और हाँ, एमसीक्यू का आंसर यही था करेक्ट, कि न्यूरेक्टमी विद मेश रिमूवल। मैश जो है ना, मैश वही ना एक वो उस सूरत में है जो उसमें दिया हुआ ना कि जी आप मैश बजाते खुद भी सर इसकी भी वजह से पेन होती है ना। इट्स नॉट जस्ट कि जो नर्व्स की वजह से पेन है, वो पहले आइडेंटिफाई करने न्यूरल्जिक पेन है या मैश की वजह से पेन है। मैश भी तो करती है ना पेन, इस वजह से वो मैश रिमूवल का वो जो करते हैं ना। लेकिन वो उसमें ओके, है कि हाँ, ठीक। कि मैश, लेकिन मैश रिमूवल जो है ना एज ए सॉरी, लास्ट मैं रिजॉर्ट होगा। दरमियान में मैं आई लॉस्ट द कनेक्शन। मुझे ये बताएं कि इसमें इस केस में रिकरेंट हर्निया का कॉज क्या था? हाँ, ये कि रिकरेंस इसकी हुई क्यों, वो ने सर ने पूछा मुझे कि इज दिस पेशेंट हैविंग अ कफ एनी यूनिट यूनिट सिम्टम, तो मैंने कहा था नो, कफ भी नहीं है, लेकिन उन्होंने मैं जो होता है ना टेक, उन्होंने कर लिया हाँ ये भी हाँ। और पूछ रहे थे कि जी स्मोकर तो नहीं है, इसके क्यों रिस्क फैक्टर्स क्या थे, डायबिटिक है, कोई ठीक है। हीलिंग में कोई इश्यूज थे इसके, कि क्यों इसको रिकरेंस हुई है। फिर आई वुड लाइक टू रिव्यू द नोट्स, प्रीवियस नोट्स, उसमें क्या कोई इन्फेक्शन तो नहीं, कोई हेमाटोमा तो नहीं डेवलप हुआ था। हाँ, ये ठीक है, पूछना चाहिए था। टेक्निकल फैक्टर्स होते हैं, तो वो चीजें आ जाती हैं कि वो दो तीन आपने पूछ ली, लेकिन उसके एसोसिएटेड बाकी में, क्योंकि ये दोबारा भी हो सकता है ना, देखिए दूसरी तरफ भी हर्निया इसका है। इसलिए ना था जिसको बायलैटरल हर्निया पहले ऑपरेट हुआ हुआ था, और अब फिर उसको रिकरेंस हुई है एक साइड के ऊपर, तो देयर हैज टू बी अ कॉज। या बिल्कुल। पूछना चाहूंगा, स्मोकिंग, हाँ, क्रॉनिक कफ, कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। ठीक है, एनी हिस्ट्री ऑफ chronic illnesses like hepatitis with ascites, और मतलब any history of carcinoma previously, ताकि मतलब previous ये क्या कहना चाहिए at the outset क्लियर हो जाए, क्योंकि फर्स्ट आप हिस्ट्री लेते हैं, then you move on to examination. You mentioned these points, but you mentioned in the part of examination. इसमें इसमें से अच्छा, एक ठीक अगर है। छोटा अगर हम बोल दें कि आई विल आस्क फॉर चेक फॉर द रिस्क फैक्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द हर्निया, तो उसके अंदर सारी चीजें आ जाएंगी। बिल्कुल ठीक है, वो ऐसे भी कर लें, एग्जामिनर को अगर बिल्कुल ऐसे पूछना कर लें, चाहेगा तो पूछ ले। बिल्कुल ठीक है। हम्म, ठीक है। हम्म, ठीक है, सही है। ठीक होगा सर। तो ठीक है सर, फिर छुट्टी करें फिर, दो हो गए आज। एक आखिरी, या आखिरी, बस करें? चलें फिर मैं, चलें पूछेगा मैं फिर जवाब देता हूँ। मीजान तो करेगा दे या ले मैं? जवाब। अभी तो यार आई एम मैंने जवाब सॉरी, देना है ना। स्टिल ड्राइविंग। हाँ, उस्मान। अभी तो मैंने जवाब देना है ना सर। अच्छा चल ठीक है, तू मैं दे ले पूछूंगा, जवाब। तू पूछ रहा है? अच्छा, डॉक्टर उस्मान, यस सर। a 46 years old lady has come in emergency department with the complaints of pain upper abdomen along with vomiting for the last 2 days. How will you proceed with this patient? A 46-year-old female with vomiting and upper abdominal pain. First of all, I would like to take the history from the patient. What is the color of the vomiting, and is it projectile, non-projectile, and how many episodes of vomiting she has? Is there any bleeding from the vomiting, and are there any contents of vomiting? Is there any history of weight loss and constipation, or any upper or lower GI symptoms? After that, I will examine the patient. I would like to see her vital signs. I will start resuscitating the patient with. I will like to pass 2 IV lines along with the Ringer's lactate. I will see her pulse, and I would like to know the vital signs of the patient. And I would draw the samples for blood grouping, cross matching, and fluid and electrolytes. And I will ask about any previous episodes of vomiting. What is the color of the vomiters? I would like to know, is it bile stained or non-bilious, or it is bloody? Okay, And so
So the pulse is 100 beats per minute. BP is okay, and there is tenderness in epigastrium and right hypochondrium, and other than that, the vomiting is non-projectile, and it consists of yellowish contents, and it is in small amounts, and the patient has similar 2 episodes in the past 3 months. How will you proceed I now? would I would like to ask the previous history, and I would start investigation. I would like to have chest X-ray of her in standing position after resuscitation to see whether is there any free under No, air under diaphragm. She there is no air. amylase levels. I would like to have amylase level and ultrasound abdomen. Is there any finding of the ultrasound in the abdomen? And would also ask her whether she has history of weight loss or Okay, dysphagia. so ultrasound shows multiple gallstones in the gallbladder, and there is a pericholecystic fluid is seen, and the gallbladder wall is thickened. So Okay, what then next? I Next will treatment. make patient NPO. I will put her on fluids, analgesics, antibiotics, and proton pump inhibitors, and see the response. And I will pass NG tube and aspirate any contents from the stomach, and see whether I will give her her antiemetics such as on densitron, and I will check her electrolytes, especially potassium and chloride and sodium. Okay, And I would admit her in high dependency unit for monitoring. I will examine her abdomen, whether it is distended or not. I will do digital rectal examination to see whether there is any evidence of so so hard stools. you continue your management for 3 to 4 days, and after 3 days you notice that the patient's vital signs are worsening. His Her pulse is now 120 beats per minute. She's having episodes of fever, and her TLC count is raised from the previous count. How will you proceed And now? I would like to know about her LFTs. Does she have any jaundice or not? These are And LFTs, bilirubin is normal, ALT is raised about 60 international units, I and would ask my radiologist. I would ask my radiologist to comment about diameter of CBD, and I would also like to have a contrast and a CT scan of the abdomen to see whether she has any evidence of pancreatitis or not, along with amylase and lipase levels. And Mileage is mildly raised. CT scan is otherwise normal apart from gallstones, and radiologist says that CVD is normal. So what it means next? that. And what about the condition of inflammation around gallbladder? Gall It means that she is having developing empyema and cholangitis. I would ask I would like to have MRCP. Is there any obstruction in distal CBD, and or I would like to do ERCP to relieve the symptoms. And but there uh, okay, then I will. It means that she is probably developing either mucocele or empyema. So I will plan emergency cholecystectomy because she is not improving with the okay. conservative So management. what is your plan of doing cholecystectomy? Because her gallbladder is distended, I would like to do open cholecystectomy. Because after 5 days, it will be difficult for me to do laparoscopic Is not cholecystectomy. The patient is not willing for open cholecystectomy. So what will you do? As I am not confident with laparoscopic cholecystectomy in this case, I would ask the help from a senior hepatobiliary surgeon or my senior colleague, or I will arrange a transfer of the patient to a higher center where they can perform emergency cholecystectomy laparoscopically. Okay. So there is a hepatobiliary surgeon in your unit. He's doing surgery and you are assisting. How will he place the ports in laparoscopic cholecystectomy?
First of all, he will place the ports, umbilical port for the camera, and then he will place one port in epigastric region, and third port in right hypochondrium, and fourth port in right iliac fossa. Uh, yes. He will be doing laparoscopic cholecystectomy with standard 4 ports. So what the right hypochondrium port, what it is used for? Right hypochondrial port is used for holding the grasper, right? Holding the? Right hypochondrial port is for supporting the gallbladder. Okay. Which part of the gallbladder? Hartmann pouch. Neck of the gallbladder. It is used to hold the neck of the gallbladder. Okay. And the fourth port you have mentioned, what it is used for? The right iliac fossa port is for holding the fundus of the gallbladder, and umbilical port is for camera, and epigastric port is. And what? How do you make the position of patient in this lap cholecystectomy? Patient, the position of the patient will be right head side up and left side down. So the gut can go down. Okay. That is reverse Trendelenburg position. Okay, so when he has started the case, he is experiencing difficulty because of huge distension of gallbladder and multiple adhesions in the Callet's triangle. So what are the Yes. what maneuvers will be helpful to him in your opinion? First of all, he can aspirate the distended gallbladder with the help of a needle, wide bore needle, cutaneously, Okay. and aspirate all mucocele or pus from the gallbladder, and make and also if he has failure in procedure, then he can abort the procedure and convert into open, or otherwise percutaneous cholecystectomy can be done for emergency purposes, and Before that, cholecystostomy. no, before that, any procedures, any maneuvers before that? Before putting in aspiration of the bile. Before doing this last attempt, or as you have said, that conversion and other things, before that, are there any maneuvers which can be helpful? He can pass. We can pass NG tube to deflate the stomach, and also we can deflate the gallbladder, and should have. He can do laparoscopically. Fundus first approach can also be done, and partial cholecystectomy can also be attempted laparoscopically. Okay, so the surgery is done and the patient is good after the surgery, and she's discharged on 4th post-op day. She returns about on 12th post-op day with the complaints of severe abdominal pain for the last 1 day, along with abdominal distension. And she has tachycardia of 120 beats per minute. What will you do now? Okay, I will admit the patient. I will take. What are you suspecting first? I am suspecting there is she has also fever. Yes, she has fever, about 100. Yes, there are two possibilities. Likely there can be a biliary leak, or there can be a subphrenic, because initial surgery was difficult, and there can be subphrenic abscess. I will admit the patient, start resuscitation, give her fluids, make her NPO, and get ultrasound of the abdomen to see whether there is any collection. And I would also like to have LFTs of the patient to see whether there is any signs of CBD injury. Ultrasound shows collection in the whole of the abdomen. It means that there is a major. I would ask the radiologist to aspirate the excessive part of collection to see whether it is bilious, or it is pus, or it is bilious. And it is bilious. What will you do now?
And then I will request him to put percutaneous drainage in subphrenic space or hepatomorizan pouch, and I would like to investigate what is the cause with the help of MRCP after resuscitation. I will do MRCP to see what is the source of bile leak, whether it is a ductal injury or is there any accessory bile duct leakage. On admission, the patient's pulse was 120. Now it is, after 6 hours, it is 140 and his RBP is 90/60. What will you do? Now I would again contact my senior hepatobiliary surgeon, and she might need a re-exploration. And if she has CBD injury, I'm unable to be negotiated with the ERCP. We will do ERCP and see what is the extent of injury. If it is just slippage of clip, we can put in uh, endoluminal stunt with the help of endoscopic ERCP. And if it is a major duct injury, then Gastroenterologist refuses ERCP. He says the patient is too unstable. then I will open the patient, and with the help of hepatobiliary, I will call the hepatobiliary. If you open the patient, what will you do? Before opening the patient, I will put in the You have drain. opened up the patient. Now what will you do? I will before opening, I will like to know the anatomy of the hepatobiliary system with the help of MRCP, and I will call hepatobiliary surgeon along with me. And if it is facility is not available, then I will open and just put in a drain to do damage control surgery and come out and arrange referral of the patient towards higher center. Okay, thank you, Dr. Usman. हाँ भाई शफाकत, पहले तू बता फिर मैं बताता हूँ. इसके अंदर ना तो स्टार्टिंग फ्रॉम योर सिनेरियो के इट वाज एम्पाइमा, उसमें जो मुझे लगा कि उसमें काफी थोड़ा सा टाइम के बाद जो है ना, अदरवाइज जैसे आप दे रहे थे फीचर्स इसकी ना, तो टू बिगिन विद द एम्पाइमा था. ठीक है, इन्वॉल्व इज सीनियर सर्जन, और ठीक है आपने कर लिया. और उसके बाद जो पोस्ट ऑपरेटिव जो सिनेरियो था, तो इट्स क्लियर कि इट्स लीकेज, जो उसमें अल्ट्रासाउंड भी आया कि collection, it's in the whole of the peritoneal cavity. So it's not just putting in the drain in this hepato-Morrison pouch, peritoneal pouch जो Morrison pouch में आप डालें, ठीक है, बाकी किस तरह ड्रेन होगा. तो द फर्स्ट स्टेप इज जो आपका जनरलाइज है ना, ये तो जनरलाइज है, तो इसको तो करना पड़ेगा. या तो लैप्रोस्कोपी, द सिंपल स्टेप इज डू द लैप्रोस्कोपी and do it in the lavage and put in the drain and come out. और बाकी कोई एनाटमी को आपने इस वक्त इतने अनस्टेबल में लेप्रोस्कोपिक मेरा ख्याल है नहीं करेंगे, इतना अनस्टेबल पेशेंट तो ना. नहीं सर, ये जो ये वाला जो है ना पेशेंट, जो आपने जैसा बताया ना, जिसमें आप उसका जो आपने लिवाज करना है ना, ठीक है, तो आपने लिवाज करना बेसिक है कि आपने ईआरसीपी वगैरह उसके ऊपर भी जाने की मेरा अपना कि एमआरसीपी ईआरसीपी अभी इस स्टेज पे नहीं, इस स्टेज पे क्या है, इसको ड्रेन किया जाए, वो ओपन से कर लें, ठीक है, नहीं लैप्रोस्कोपी नहीं, ओपन से करें. हाँ, आप सिर्फ क्या करना, आपने इसको वॉश करना है. यू नीड टू डू पेरिटोनियल लिवाज, थोरो लिवाज एंड पुट इन द ड्रेन एंड कम आउट, ठीक है. पोस्ट ऑपरेटिवली गेट द एमआरसीपी, गेट द ईआरसीपी, एंड if there is a minor leak from the cystic duct, then you can put in the stent. वो आप फिर बाकी उसकी मैनेजमेंट आ जाए, ठीक है. तो लेकिन ये क्लियर कट है कि ये इट्स लीक इट्स नॉट अ लोकलाइज, जनरलाइज है, तो उसमें तो आपने पेरिटोनियल लिवाज करना है, either with the open or the lab. The best is the lab. दूसरा तू मुझे बता कि ये उस्मान ईआरसीपी वगैरह तू प्राइमरीली क्यों करवा रहा था, जब पहली दफा एम्पाइमा हुआ है तब भी तूने ईआरसीपी और एमआरसीपी कोलिंजाइटिस के हुआ है, यू सस्पेक्टिंग कोलिंजाइटिस. सर वो मैं इसलिए कर रहा था कि फीवर है उसको, और जो है ना पेन राइट हाइपोकॉन्ड्रियम है, शी माइट हैव स्लिप्ड स्टोन्स. नहीं वो तो जॉन्डिस तो मैंने एलएफटी का है ना, नॉर्मल है तुझे, थोड़ा सा एएलटी बढ़ा हुआ है, वो तो लोकल थोड़ा सा ना. देखिए यू कैन आस्क whether the palpable mass, आप कहते हैं टेंडर मास इज palpable, आप उनसे पूछते, आप अल्ट्रासाउंड से पूछते कि इज इट डिस्टेंडेड गॉल ब्लैडर, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द कॉमन बाइल डक्ट, इज देयर जॉन्डिस, क्लिनिकली जॉन्डिस भी है पेशेंट के नहीं है, वो मैंने बताया ना, सीबीटी नॉर्मल है, जॉन्डिस नहीं है, वो तो मैंने बताया जॉन्डिस. तो उसमें मतलब ईआरसीपी या वो बाकी एमआरसीपी, अब यू आर गोइंग टुवर्ड द कोलिंजाइटिस, सो इट वाज अ क्लियर कट इट्स एम्पाइमा, तो एम्पाइमा की तरफ मैनेजमेंट थी. Okay, I ask you one question. Suppose this is the same patient he has presented to you
in the OPD with the ultrasound reports that mentions that it's a gallstone, multiple gallstones, and she is having a repeated episodes of the biliary colic, then what will you do? अच्छा शवाकत, एक बात और मैं कर लूं, सॉरी, एक बात, ऐसे पेशेंट में हम तो वैसे हमारा प्रोटोकॉल था कि जो एक आध दिन की हिस्ट्री पे है, हम तो उसको विद इन 3 डेज कोशिश करते थे लैब पोली कर दें हम अर्ली। हाँ बिल्कुल, हम कंजर्वेटिव पे क्यों डालें रिकमेंडेशन। अब अगेन कोलिसिस्टाइटिस यू नीड टू मेंशन द ग्रेड्स। इसका ग्रेड कौन सा है? ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ये कौन सा ग्रेड में आ रही है? ठीक है, तो वो आपने इनसे ज्यादा आपने पूछना है। इसकी आर्गन डिसफंक्शन के साइंस तो नहीं थे, वो आपने पूछना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आर्गन डिसफंक्शन है तो सीधी सीधी ग्रेड 3 में चला गया। ठीक है, अगर आपको लगता है कि जी 72 आवर्स से ड्यूरेशन ज्यादा है, पैल्पेबल मास है, टीएलसी इज मोर देन, आप उसके कह लें रेज्ड जो, तो वो आपके फिर उसमें चला सीआरपी का, तो वो आपका ग्रेड 2 में चला जाएगा। ठीक है, वाइट हो सकता था। हाँ, तो वो आपने फिर ग्रेड के ऊपर डिपेंड है। ग्रेड 1 क्लियर कट अर्ली लेप्रोस्कोपी कोलिसिस्टेक्टमी, ग्रेड 3 इफ यू आर एक्सपीरियंस देन लैप कोली, अदरवाइज ड्रेनेज वो किया जा सकता है। और ग्रेड 2 प्लस माइनस है कि आप उसको कंजर्वेटिव करेंगे या अर्ली लैप कोली करेंगे। ठीक है, तो एनीवे अब सेम पेशेंट ही हैज प्रेजेंटेड टू यू इन द ओपीडी with the biliary colic, and she has shown you the report of the ultrasound report which reveals the multiple gallstones. Now what will you do? I will, because she has episodes of biliary colic and she does not have any evidence of cholecystitis, then we can yeah, she has cholecystitis or just biliary colic? Biliary colic, and she has multiple gallstones, then we can do elective cholecystectomy. I will do elective cholecystectomy. I will give her appointment of open or laparoscopic? Laparoscopic elective cholecystectomy after 2 months. Elective cholecystectomy, which open or laparoscopy? What will you offer? Laparoscopic. Laparoscopy. Okay. Now you have prepared the patient for the laparoscopic cholecystectomy. So you are in the operation theater. What were your steps? First of all, I will create a pneumoperitoneum. I will place the patient on a table, and I will place my camera port from umbilicus and through a Hassan open technique. And then I will do diagnostic laparoscopy and see the condition of the gallbladder, whether there is any adhesions or not. And then I will place my epigastric port. And after that, I will put a third port in right hypochondrium and fourth port in right iliac fossa. Yes, next. And then I will retract the gallbladder to caudally towards shoulder of the patient, and know the anatomy of. I will delineate the anatomy of triangles of Gallows. I will try to identify. I will try to establish critical view of safety by retracting the fundus of the gallbladder upward and Hartmann pouch towards the right iliac fossa, and I will strip off the adhesions from cystic duct, and I will identify cystic artery, and I will. What are the landmarks for doing the safe laparoscopic cholecystectomy? It is a critical view of safety that only two structures are entering the gallbladder. I would first of all dissect the hepatic plate and delineate the anatomy of common bile duct, cystic duct, and what are the landmarks? R4U line. Critical view of safety. What are the landmarks? One is there is a. I will dissect the hepatic plate and. No, I'm not asking you for the dissection. I'm just asking the landmarks. What are the important landmarks which you should remember? It is a triangle that is a cystic duct. Okay, and you mentioned that. Yes, yes. Common hepatic duct and liver else? plate. What else? Liver plate, and common hepatic duct. Oh, and between these are the boundaries of the Calais triangle. What else? What are other important landmarks? And there is only two structures that are entering into the gallbladder. Yeah, that's right. You have mentioned it. Okay, from where you will start the dissection? At which level? I will start dissection from the hepatic plate. I will remove the peritoneal fold from. At which side?
So we have a at R4. gallbladder, it's a fundus, body, neck, then cystic duct. From where will you start the I dissection? will, I will start dissection from near to the gallbladder towards its neck, towards Neck, fundus and neck. Yes. fundus and neck. Oh, sorry, neck of the gallbladder. Neck, okay. So neck and there's a cystic duct as well. So when you start Yes. at which level? Towards, I will remove the peritoneal folds from liver plate. From the side of Liver the plate. liver, I will You will start start. with interior Yes. dissection first. Will you start with Yes. dissection? Yes, I will start anterior dissection first. I will Anterior expose dissection. cystic duct and first anteriorly, and then I will clear it from posterior side, and I will separate it from hepatic artery, oh, sorry, cystic artery, and I will see whether there are I will be able to identify cystic duct and So you artery have, okay, you have done the separately. dissection. You have done the dissection or the two structures of entry into the gallbladder, cystic duct and cystic artery. You have identified it. What next? And then I will clip cystic artery first and separate it. I will apply two proximal clips and divide the cystic artery, and then I will have easy access towards cystic duct. Then I will clip the cystic duct as close as to the gallbladder neck, and I will What will doubly be the distance clip. between the clips? It should be almost 1 to 3 millimeter between Okay. two clips. Now you have performed the cholecystectomy. You have removed the gallbladder. What's the next step? Then I will, after removing the gallbladder, I will again go to the liver and see whether there is any leak of bile from cystic duct stump or artery, and I will thoroughly wash Okay, the area. okay, there's no bleed. What's the next step? Then I will see the liver bed, and is there any It's clean. bile It's clean. leak or bleed from the Clean. liver? It's clean. Then I will, before closing, coming out, I will again see the abdomen. Is there any bleed intra-abdominally or any injury? Okay, from which side we will see? You will use the umbilical port for visualizing the abdominal cavity. I will, because there are two large ports, 10 millimeter port, epigastric and umbilical. I will first see umbilical port to see any bleeding, and then I will put camera from epigastric port to Okay, now you see have put the the camera. umbilical port. Okay, okay. You have changed your camera ports. Now you're visualizing the through the epigastric port. You have noticed that your umbilical port has gone through the bowel. Now what will you do? Okay, then I will convert to. It is post-operatively or pre-operatively? No, it's the cholecystectomy is continuing. You have removed the gallbladder, so Okay. just you check the bed, liver beds, it's fine. So at the completion of your surgery, you notice that your umbilical port has gone through the bowel. Then I will convert my procedure to open surgery, and I will uh, counsel the attendants of the patient What will you do? regarding. Okay. So what will you do with the port before converting into open? What were your steps? I Is would there notify. peritoneum as well? I would notify to the all my OR team anesthetist that inadvertent bowel injury has occurred. Now we are planning to convert it into the open Okay. surgery. I will arrange my Okay. What next? Next. and then I will thoroughly Everything is inspect the. arranged. Then I will thoroughly inspect the small intestine and deal accordingly if there is. So see, the abdomen is descended. There is a pneumoperitoneum. The ports are in place. What will you do? I will deflate the abdomen and remove the pneumoperitoneum. Okay, And after that, I will remove the ports. Remove the ports and then I will open all the ports. abdomen. You will remove all the ports. Yes. Then you perform the midline laparotomy. Yes. Thank you. Now, अब इसके जो steps है ना, ये एक दफा उसमें से जरूर go through कर लें. The landmarks are the Ruvius sulcus, which is very important landmarks, are for you.
रूवियस सर्कस, हाँ सेगमेंट 4 एंड लिगामेंट ऑफ जो आता है फैल्सिफॉर्म लिगामेंट, जो नीचे उसको लिगामेंट इंसर्ट हो रहा है अम्बिलिकल फिशर में, एक लाइन बनती है, ठीक, यू नीड टू कीप अबव दिस लाइन, ROU लाइन, इसके ऊपर आपने रहना है। सही। देन द लिम्फ हाँ जी, नोड, लिम्फ नोड है सिस्टिक लिम्फ नोड, जो लिम्फ नोड ऑफ लुंड है, उससे आपने लेटर सही, रहना, मीडियल नहीं जाना। जस्ट अंडरनीथ द ठीक, लिम्फ नोड देयर इज अ सिस्टिक आर्टरी, ठीक है। तो फिर इसी तरह ठीक, ये इंपॉर्टेंट, आपने वेयर इज द, यू हैव नीड टू मेक मेंटल इमेज, वेयर द कॉमन बाइल डक्ट, वेयर द ड्यूडेनम, ये सारी चीजें जस्ट बिफोर स्टार्टिंग योर सर्जरी आपने एक स्नैपशॉट लेना है। तो दीज आर द लैंड, और डिसेक्शन कहाँ से स्टार्ट करनी है, जंक्शन पे, जो सिस्टिक जो नेक एंड सिस्टिक डक्ट जंक्शन जो है वहां से पेरिटोनियल फोल्ड है, यू विल डिसाइड मेक अ स्मॉल डायथर्मी हुक लें, वहां से आप उसको जाएंगे, स्टार्ट विद द पोस्टीरियर डिसेक्शन फर्स्ट। पोस्टीरियर अपना फ्लैप जो है, कैलर ट्रायंगल बेसिकली क्या है, दो पेरिटोनियल लीव्स हैं, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर, इन बिटवीन हाँ जी, द सिस्टिक डक्ट एंड आर्टरी एंड फाइब्रोफैटी टिश्यू। आप क्या करें, पोस्टीरियर लीव को यू विल इनसाइड द पोस्टीरियर, बिकॉज इट्स रिलेटिवली ब्लडलेस, मतलब इसमें कम होती है ब्लड सप्लाई पोस्टीरियर लीव सही की, है, वो भी तो वो पीछे ट्रिकल करेगा। अगर इफ यू स्टार्ट अप विद इंटीरियर डिसेक्शन, तो क्या होगा, ब्लड होगा सारे पे स्पाइल करेगा। आपने पहले पोस्टीरियर ठीक, अप करेंगे क्लियर, देन यू कम ऑन द इंटीरियरली and then make a posterior window first, then come onto the interior window, right? So we need to ठीक है, clear all the fibrofatty tissue. अब इस ये तो मैंने डिसेक्शन की बात की, लेकिन जब हमने पोर्ट अपने इंसर्ट किए, तो द फर्स्ट स्टेप इज वंस यू हैव पुट इन द अम्बिलिकल पोर्ट, तो द नेक्स्ट इज यू आर गोइंग टू पुट इन द एपिगैस्ट्रिक पोर्ट। उसी वक्त आपने टेलीस्कोप को स्विच ओवर कर लें और फिर देख लें। एक आपने अच्छा किया कि आई विल डू दी, आपने अम्बिलिकल पोर्ट डाला तो आपने कहा था डायग्नोस्टिक में करूंगा, ठीक है, तो अपने नीचे भी आपने देखा 360 आपने देख लिया। अब हो सकता है कि आपका ट्रोकार जो है ना बाउल में गुजर गया हुआ है, तो वो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आप वो किस तरह पता चलेगा, एपिगैस्ट्रिक में डालेंगे कैमरा और उससे अपने अम्बिलिकल पोर्ट को देख लेंगे, तो आपको शुरू में पता चल बिफोर स्टार्टिंग योर सर्जरी आपको पता चल जाएगा। अगर वो ठीक, अगर स्टेप ना किया होता, तो फिर मैं आपको पोस्ट ऑपरेटिव इस पेशेंट को ले आता कि ये इसको पेरिटोनाइटिस का सिनेरियो मिला। तो ये गुड पॉइंट कि आपने आखिर में ये देखा जरूर कि जी आपके अम्बिलिकल पोर्ट ठीक है ना, यू पिक्ड अप, ठीक है। अगर ये ना किया होता तो फिर आपका ये मैं थर्ड डे के ऊपर, सेकंड डे के ऊपर मैंने आपको पेरिटोनाइटिस का सिनेरियो बना दिया, बल्कि हो सकता है पहले दिन ठीक, में। अब now you have identified, so it's the bowel injury has occurred, so the step is you do not remove the port। आपने पोर्ट को निकालना नहीं है, वो तो आपका दिया हुआ है, आपने एक अदरवाइज नीचे जाएगा, पता नहीं चलेगा बाउल किधर गई। और दूसरे नंबर अगर एक्सपीरियंस आपने कॉल फॉर द हेल्प, लेप्रोस्कोपी के लिए भी इसको मैनेज होती है बाउल इंजरीज ना। लेकिन आप अगर इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट नहीं है, एक्सपीरियंस, तो आई विल कॉल द माय सीनियर कोलीग, ठीक है। और आई विल नॉट रिमूव द पोर्ट, पोर्ट नहीं रिमूव करना, इवन आपने लेप्रोटमी की तो पोर्ट को रिमूव नहीं करना, वो आपका गाइड है ना। कर देंगे तो ठीक है, बीच में फिर वो फिर उसके बाद जो है ना, फिर आपको छोटे इंसियन से काम हो सकता है, बड़ा इंसियन देना हम्म, पड़ेगा। तो पोर्ट नहीं आपने उसमें, और दूसरे कंटेमिनेशन भी होगी, ये इसमें कैश पॉइंट है। ठीक, हाँ, तो ये कैश पॉइंट है कि आपने जब भी स्टेप्स बोलने हैं तो आपने ये जरूर देखना है कि जो स्टार्ट पे किया तो कोई इंजरी तो नहीं हुई एक्सेस, क्यों 50% ऑफ द कॉम्प्लिकेशन आर रिलेटेड टू द प्राइमरी पोर्ट, जो आप डालते हैं ना उससे होती है। तो वो आपने हम्म। डायग्नोस्टिक करनी है एपिगैस्ट्रिक पोर्ट में डाल के, तो आपने ऑल अराउंड देखना जरूर है। बाकी सर मैदान में कुछ और ऐड करना चाहें तो। अच्छा, हाँ जी, गुड सिनेरियो। और नहीं आई आपकी जब आपने ये कहा ना कि आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, I'm not confident to operate upon this patient in this scenario। तो अल्फाज का चुनाव जरा को थोड़ा सा बेहतर कर लें। You can ठीक, always say कि with my expertise I would not like to operate upon this patient। सिंपल आप इस तरह ठीक, कह दें, या आप ये कह दें कि जी आई वुड लाइक टू कॉल फॉर हेल्प, आई वुड लाइक टू आस्क फॉर द हेल्प ऑफ असिस्टेंस ऑफ हेपेटोबिलियरी सर्जन। इस तरह की को बात कर लें, लेकिन आप अपने कॉन्फिडेंस का जिक्र इस तरह से ना करें कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, सही, बिकॉज यू आर ठीक, अपीयरिंग एज अ कंसल्टेंट इन दिस एग्जाम। सही। सर इसे मैं फिर सिनेरियो को दूसरे में ले आया हूँ ना, कि जी बिल्कुल सिंपल सा यार है आवाज, मैं मैं इसीलिए ना सिनेरियो को दूसरे में ले आया हूँ। इसने कहा था ना आई एम नॉट गोइंग टू डू द लैब, ठीक है, तो मैं सिनेरियो दूसरा ले आया हूँ कि बिल्कुल सिंपल सा गॉल ब्लैडर है, क्लियर कट, अब क्या करेंगे। तो मैं उसको ठीक है, स्टेप लेके आना चाह रहा था कि ये बताए बिल्कुल वो उसने स्टेप्स उसके बाद जो बताया बिल्कुल ठीक है, वो जो जो चीजें आपने वो क्लियर की हैं उसके बाद बाउंड्रीज एंड ऑल, अच्छा है, वो बड़ा
इसके लिए, उस्मान के लिए भी, हमारे लिए भी। और ये जो गट इंजरी वाला सिनेरियो है वो भी अच्छा इसने जो हैंडल कर लिया एंड पे। हाँ बिल्कुल। और ये ठीक ये है। स्टार्ट पे ही ना, जो ही पोर्ट आप डालते हैं ना ब्लाइकल, तो उसके नेक्स्ट जो एपिगेस्ट्रिक जाते हैं उसमें अपना कैमरा स्विच करके देख लेते हैं, तो उसे पता चल अच्छा, जाता उसी है वक्त शुरू में ही? उसी वक्त शुरू में ही, तो आपको पता चल जाता है कोई ठीक गड़बड़ है। हो गई है। अच्छा, अगर अगर वो आपको शुरू में ही पता चल गया, फिर प्रोसीजर अबॉर्ट करके ओपन में कन्वर्ट नो करें नो बस नो फिर नो उसी वक्त नो ही? नो 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 देखिए, यू कैन डू इट लेप्रोस्कोपिक, इट डिपेंड्स अपॉन योर स्किल्स। आपने क्या करना, डिपेंड्स अपॉन द एडिशंस होंगे, यू नीड टू टेक डाउन द एडिशंस विद द सीजर। सीजर से उसको पूरा लाइसेंस को, पोर्ट को नहीं निकालेंगे, पोर्ट को आप थोड़ा सा ऊपर रखेंगे ट्रैक्शन देके, ताकि बाउल उसके अंदर ही रहे। ठीक है, ऑलराउंड सारी आपने डिसेक्ट किया, उसके बाद जब पकड़े और उसके इंट्राकार्पोरियल या सूचेस करें और कंप्लीट योर प्रोसीजर। इट डिपेंड्स अपॉन द स्किल्स ऑफ द ऑपरेटिंग सर्जन। ठीक है, सो ये नहीं कि उसको हमने प्रोसीजर अबॉर्ट कर देना। अब पकड़ी गई है तो कोई ऐसे ही देखा क्लीन कर, जो ट्रोकार की इंजरी है, इससे कोई ऐसी कोई डायथर्मी को कोई वो उस तरह की इंजरी तो नहीं है कि जो हमें रिसेक्शन भी करनी पड़ी, तो सिंपल आपने स्टिच ही लेने हैं। और इसमें एक ये भी आपने ट्रोकार ऑप्शन, डाला 5 mm का, अगर डाला हुआ है तो 5 mm तो इतना ज्यादा तो नहीं है रहने। इसमें एक ये भी ऑप्शन होती है जो हमने स्टेपल। देखा है सीनियर्स को करते हुए, कि उसी अम्बिलिकल इंसिजन को हल्का सा बड़ा करके उधर से ही गट लूप को निकाल के उधर से ही हाँ रिपेयर कर देते हैं। बिल्कुल, तो पोर्ट को निकालना तो नहीं है, पोर्ट ही आपका, तो देखिए वो बाहर आराम से निकाले, वहीं से स्टिच करें, वो वापस अंदर कर दें। पोर्ट को नहीं निकालना, मेन इसका कैच है कि दूसरा बेशक ओपन इसमें, करें जो भी करना है। दूसरा डिसेक्शन में एक लफ्ज यूज होता है सीवीएस, क्रिटिकल व्यू ऑफ सेफ्टी। वो एक अच्छा लफ्ज है, वो भी बोलना चाहिए। क्रिटिकल व्यू ऑफ सेफ्टी हाँ, बोला था इसने। मैंने बोला बोला था, है वो। बोला। यस। अच्छा ठीक है, हम्म ठीक है। तो चलिए सर, और कोई चीज है तो फिर हम, नहीं तो फिर खुदाफिज करते हैं अभी। चल बस आज काफी हो गई है यार आज। काफी हो गया, काफी ज्यादा टाइम भी लग गया ना। इसको सो जाएं, पोर्ट्स, सो जाएं। जो पोर्ट से राइट लेग फोसा की बजाय राइट लंबर रीजन में नहीं होता इसका? अच्छा, चलिए पोर्ट कैसे रही है सुनने। पोर्ट का बेसिकली जहां पे भी है ना, इट डिपेंड्स अपॉन द पेशेंट बॉडी, ये फिक्स पोर्ट नहीं है कि यहाँ पे होगा यहाँ पे बस होगा। ठीक है। हर जो मेरी आपने बेसबॉल मानने डायमंड मुताबिक, कॉन्सेप्ट जो है ना, उस पे आपने जो डिफरेंट एंगल्स है वो आपने माइंड में रखने हैं। लेकिन आपका नॉर्मली ये था कि कैमरा पोर्ट आपका अम्बिलिकस में, एक एपिगैस्ट्री में, एक राइट एपिकॉन्ड्री मिड क्लेविकुलर लाइन है। वो जो पोर्ट है ना, पोर्ट का आपस में डिस्टेंस जो है एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, उससे आपने लेटरल डालना है। ठीक है, लेटरल और नीचे कर लेंगे, बिल्कुल सेम लाइन में नहीं। राइट इलिफोसा में तो बहुत नीचे चला जाएगा, उसको रिट्रैक्ट करना है, क्योंकि फंडस को तो लेके ऊपर तक उसने लेके जाना लिवर में। बहुत नीचे डाल देंगे तो मुश्किल होगी इसको रिट्रैक्ट करने में। इट डिपेंड्स कि अगर तो सर लेकिन abdomen ये जो छोटा है ना। पोर्ट जब हम अंदर से निकलता है, तो ये सीकम के साथ जाके तकरीबन निकलता है जाके, ये जब हम डाल रहे होते हैं देखो, तो नहीं नहीं यार, ये अगर बटन ये के नहीं करीब बोलना, होता है। देखिए देखिए पेशेंट के एब्डोमेन अभी बिल्कुल यंग सी कोई फीमेल है, उसका एब्डोमेन बिल्कुल छोटा सा है, तो फिर तो पोर्ट नीचे चला जाएगा। लेकिन एब्डोमेन अगर बड़ा है तो पोर्ट उसका वो नीचे राइट फोसा में डाल देंगे तो वो तो मुश्किल पड़ जाएगी। ये आपने देखना पेशेंट की, उसके देखना है कि बॉडी उसकी कैसी है, उसके एब्डोमेन कैसा है। जो मेन इसका याद रखने वाले, दो पोर्ट के दरमियान डिस्टेंस जो है ना, टू पोर्ट के 5 एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर एटलीस्ट। सही है। अच्छा तो ठीक। उस्मान, उस्मान इसमें पोजीशन में अच्छा लफ्ज जो है ना, वो एंटी ट्रेंडलनबर्ग लफ्ज यूज कर, बजाय वो जो तूने लफ्ज यूज रिवर्स किया, मजा नहीं आया रिवर्स था ट्रेंडल उसका। नंबर। रिवर्स राइट ट्रेंडलनबर्ग अप, विद राइट अप बाय। राइट अप, हेड अप, सिंपल। तूने कोई लेफ्ट डाउन और इसको इस तरह कुछ कहा था तूने, कि राइट लेफ्ट अप, डाउन और राइट अप, हेड अप। राइट अप हेड अप रिवर्स ट्रेंडल नंबर है ना, असल में ना हुआ ये था कि रिवर्स शुरू में ना मेरे टेंडरबर्ग नहीं, जहन से वो निकल रिवर्स टेंडरबर्ग तो होगी ना, स्ट्रेट स्पाइन में पोजीशन है ना, तो स्पाइन तो नहीं है ना, अब तो राइट अप भी कर रहे हैं ना इस पे, हाँ, राइट अप और हेड अप। हेड अप। ये सिंपल सा जो हम बोलते भी उसका ड्यूरिंग लैप के जी करें जी पोजीशन ना। हम्म। हम्म, और हर्निया का जो है डाउन, हम्म, हेड डाउन। हर्निया में तो हाँ उल्टा होता है ना। हाँ। देखें लेप्रोस्कोपी प्रिंसिपल ये है कि जिस तरफ आप ऑपरेट कर रहे हैं ना, वो आपकी साइड ऊपर अपनी करनी है। ठीक है, हम्म। आप कर लेंगे, बेसिक चीजों को आप डिस्प्लेस करना है ना, बावल है, बाकी जो चीजें हम्म। हैं। अब कोलिसिस्टेक्टमी का हेड अप करेंगे तो सारी बाउल नीचे आ जाएगी, राइट अप करेंगे तो उसकी लेफ्ट साइड पे चलेगी, तो आपको एक वर्किंग स्पेस मिल जाएगी। हर्निया अगर कर रहे हैं तो आपके लेग उसके रेज कर देंगे, और जिस तरफ का हर्निया उस साइड को उसको रेज कर लें, तो चीजें डिस्प्लेस हो जाएंगी। ठीक है। ठीक है, तो चलें जी, ठीक है सर। तो थैंक यू चलो सो थैंक यू मच। सर। आज के भी हमारे हो गए काफी सिनेरियो में, कुछ चार एक तो ही गए हैं डिफरेंट उसके अंदर जो है ना। तो थैंक यू सो मच, सी यू अगेन टुमारो इंशाल्लाह। सलाम अलैकुम। बस।